Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. My name is Ashish Singh and I'm going to be teaching you polity. और आज पॉलिटी में हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट एक ऐसी पोजीशन है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, खासकर उनको जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि यार प्रेसिडेंट तो बहुत पावरफुल पोजीशन होगी। एक्चुअल में होती है, बट व्हेन वी टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका, बट इन इंडिया वी फॉलो पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो प्रेसिडेंट की पावर्स इतनी नहीं है। हाँ, पोजीशन जो है वो एक डिग्निटी वाली पोजीशन है, एक बहुत ऑनरेबल पोजीशन है, हम उस पर कोई नहीं डाउट कर सकते, बट पावर्स नहीं होती हैं। तो आज हम उसी बारे में, उसी पोजीशन को अच्छे से समझेंगे और इन डिटेल समझेंगे। तो जो आज हम क्रोनोलॉजी फॉलो करने वाले हैं प्रेसिडेंट के लिए, वो कुछ इस तरह होगी कि पहले हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, देन अबाउट द क्वालिफिकेशंस एंड ओथ, फॉलोड बाय टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग, पार्डनिंग पावर, एंड फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। So let's start with this. The first point that I'm going to be talking about is election of the president. तो इलेक्शंस में प्रेसिडेंट के हम डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते हैं। लाइक जब मैं कह रहा हूं कि हम, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक। पब्लिक वोट नहीं करती है, इसीलिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब आर्टिकल्स कौन कौन से कवर करते हैं प्रेसिडेंट को? आर्टिकल 52 गिव्स अस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर प्रेसिडेंट पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, तो और कौन कौन है? फर्स्ट इसमें आ जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड वन मोर पर्सन जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। So we were talking about the election of the president. अब इलेक्शन में मैंने आपको बताया कि जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो फिर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, एंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स, रिमेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies and elected members of union territories of Delhi and Puducherry. So these are the persons who vote in the election of a प्रेसिडेंट। अब ऐसा क्यों करा गया था? कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात उठी थी कि भाई हम डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए, बट उसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे वो कुछ इस तरह थे कि एक तो इंडिया में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और प्रेसिडेंट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो उसके हाथ में हम एक्चुअल पावर्स नहीं दे रहे हैं, तो अगेंस्ट द रूल ऑफ इलेक्शंस हो जाएगा, क्योंकि हम पब्लिक के हाथ में वोटिंग पावर भी दे रहे हैं और जो हम अथॉरिटी पे जिस जिस पद पर हम आदमी की बात कर रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट है, उसको हम एक्चुअल पावर नहीं दे रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टिंग थी, इसीलिए ये रूल फॉलो हुआ था कि हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली ना करवाते हुए एक
स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करें जो जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। अब ये इलेक्शन जो होता है वो किस प्रोसेस में होता है? द प्रोसेस विच वी फॉलो फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये याद रखना, हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। वी फॉलो द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो ये रही इलेक्शंस की बात। अब आपको ये भी पता चल गया कि इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन फॉर्म करता है, बट जो मेन बातें हैं इसमें वो ध्यान रखने वाली मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में चीज़ें पूछी जाती हैं कि इलेक्शन तो हो गया, अब इलेक्शन क्या हम वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट का? द आंसर इज यस। एंड हु कैन डिक्लेयर इट वॉइड? सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया can declare the election of a president void, and all the actions done by the president before such declaration will be valid. ये क्वेश्चन काफी बार एसएससी हो गया है, इवन यूपीएससी में भी काफी बार ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन जो वॉइड कर देती है एक प्रेसिडेंट का, तो उसके जो एक्शंस हैं वो वॉइड हो जाएंगे, नल एंड वॉइड, और विल दे बी कंटिन्यू एंड विल रिमेन इन फोर्स? सो द आंसर इज दे विल कंटिन्यू एंड दे विल रिमेन इन फोर्स whether or not the Supreme Court has declared the election of a president void or not. Okay, so moving on, this was all about the election of a president. Now we have to discuss about the main thing, what are the qualifications of a president. ये तो है नहीं कि हम किसी को भी प्रेसिडेंट बना देंगे, इट्स अ पोजीशन ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर, so we have to maintain a certain what we can say qualifications to elect a president. And what are those qualifications? Let's talk about them. First, it is he should be a citizen of India. आप एक चाइनीज को इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बनवा सकते, नॉट इवन ओनली चाइनीज बट बाकी देश के नागरिकों को भी आप प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। सेकंड, he should have completed 35 years of age, यानी हम और आप फिलहाल तो नहीं बन सकते हैं। And what will be the third? He should be eligible to contest election for Lok Sabha. Remember, Lok Sabha, not Rajya Sabha. प्रेसिडेंट के केस में जो क्वालिफिकेशन है वो लोकसभा केस में फॉलो होना चाहिए वो। And the third and the fourth is he should not hold any position of authority in union or state or any public organization that is there. So he should only be a president. इसका मतलब क्या हुआ? हम इससे क्या बात निकाल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब कोई मेंबर ऑफ लोकसभा है और वो प्रेसिडेंट भी है, ये पॉसिबल नहीं है। आइदर ही कैन बी अ प्रेसिडेंट और ही कैन बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा और एनी अदर मेंबरशिप दैट इज देयर इन इंडिया। ओके, ये हो गया बेसिक क्वालिफिकेशंस। इससे ज़्यादा भी हैं बट कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव ओनली दिस 4 क्वालिफिकेशंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन,
ओथ, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट. So the basic answer to this and the only answer to this is Chief Justice of India. And in his absence, senior most judge of a Supreme Court. ये हमेशा याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये कोई ऐसा ज़्यादा टेक्निकल बात भी नहीं है कि द oath is administered by the Chief Justice of India, and in the absence of Chief Justice of India, the oath is administered by the senior most judge of a Supreme Court. What is our next topic about this? Should be term and impeachment. Yes, term, impeachment, and vacancy. Okay. So, how long a person can serve as a president in one duration? See, like right now, our president is Draupadi Murmu ji. So, how long she is going to be a president in his first term? In her first term, I mean, that is 5 years. So, the term of president is generally 5 years. Why am I saying generally? Because when the elections of a president are declared void, he has to vacate his office, and by his removal, like I will come to that also, but जनरली एंड जो नॉर्मल एक टेन्योर है वो 5 साल है एक उसका प्रेसिडेंट का. अब इसमें एक और टेक्निकल बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आते हैं कि अ प्रेसिडेंट कैन remain in office for more than 5 years until and unless his successor assumes the office. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज द्रौपदी मुर्मू जी अभी हमारी प्रेसिडेंट है एंड इन द नेक्स्ट इलेक्शंस इफ शी लूजेस हर इलेक्शन देन she has to remain her office for more than her term because until and unless the next president comes and assumes their office. ये हो गई हमारी टर्म की बात. Now let's talk about the most important and the very crucial aspect of a president, that is the impeachment. Impeachment का मोटा मतलब है रिमूवल. ये कोई ऐसी ज़्यादा वो मुश्किल टर्म. So the next topic is term, impeachment and vacancy of a president. Let's get on to it. Term of a president. See, the term, or we can say tenure. The tenure of a president, like one tenure, in one go, the president can remain in their office for 5 years. Now, there is a catch. See, if the election of a president, like I already told you, if the election of a president is declared void by the Supreme Court, then they will have to vacate their office before completing their term. And as I already told you about that, जो भी actions लिए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द नल एंड नल. रुकिए यार, एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जब सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि ये नल एंड वॉइड है, उससे पहले के जो एक्शंस करे हुए होंगे प्रेसिडेंट के, वो सारे दे विल रिमेन इन फोर्स. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट, like the removal of a president by any means will not
affect the actions done by a president. So the usual term of a president is 5 years. Now there are few things, or we can say there are alternatives through which a president can be removed, or can be said like they can be impeached from their office before the completion of their term. And now we will talk about that also. Impeachment. It is the most crucial aspect with respect to an exam about the president. इम्पीचमेंट का मोटा मोटा मतलब होता है रिमूवल. ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि टर्म देखकर आप डर जाओ. इट बेसिकली मीन्स रिमूवल. अब सी द रिमूवल ऑफ अ प्रेसिडेंट कैन बी डन ऑन ओनली on the basis of one ground, that is violation of constitution. चलो सही है, ऐसे भी बढ़िया है. तूने रोक दी, ठीक है. वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो टर्म है, एक तो ये बहुत बड़ी टर्म है, बहुत हैवी टर्म है, इसलिए शायद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइंड नहीं है. क्योंकि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कंस्टिट्यूट ऑफ मेनी थिंग्स. लाइक देयर कैन बी n number of actions that can be done by a president which can be counted as violation of a constitution. इसलिए ये important point है कि violation of constitution is not defined in our constitution. ये point note करके रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि whether or not the violation of constitution respect to the president is defined in our constitution or not. Okay, so it is not. Now the thing about the election of a president which is important is the ways which can be followed to remove a president from his office. See, first is completion of the term of president. Second, on his resignation. Resignation to whom? ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट जब रिजाइन करना चाहता हो तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपते हैं. द आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ India. This point is very important and you should note this. The president hands over his resignation letter to the vice president of India. The third alternative would be, I will write here. Third alternative is by his death. On the death of a president, they will eventually. बंद करिए बहन, में क्या बोलने वाला था. The third alternative through which a president will have to vacate their offices by his death. तो देखो डेथ पर तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है. पर वो on the death of a president, they will have to vacate their office. And the fourth alternative through which they will have to vacate their office, not alternative, but the fourth option is when the election is declared void. And who will declare such? The Supreme Court of India. Okay. So the next is erase this only.
कर दे यार. The next topic about the president is veto power. It is also a very important topic. Veto power. Veto generally means when an official action is stopped or rejected by an authority. Okay, so that is veto power. Now, if we have to study it in thoroughly, veto power. अब कोई भी जब भी कोई बिल पास होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, then to become that bill an act, the sign of a president is required. Like they will have to pass through the president to become an act. Now under article 111, प्रेसिडेंट के पास इसमें 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं. जब भी कोई बिल लोकसभा से पास हो या राज्यसभा से हो, दोनों से पास होने के बाद जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा, then the president can reject it, they can approve it, or they can रोकियो. The next topic is veto power. Veto power is also an important power that we will have to study about the president. So veto basically means it is an authority to stop or reject any official action. What is veto? The authority to stop or reject any official action. अब अगर आप ये डेफिनेशन समझ गए ना वीटो की, तो वीटो पावर में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस उसके कुछ टाइप्स हैं जो आपको ध्यान रखना होगा. अब जैसे वीटो पावर का यूज़ कहाँ होता है और क्यों होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही आपके लिए जानना. अंडर आर्टिकल 111 of Constitution, when a bill is presented to the president for his assent, the president has 3 alternatives. And what are they? First, they can approve the bill, they can reject the bill, or they can return the bill to the Lok Sabha or Rajya Sabha, or even in the case of state legislative assemblies also. Under Article 111, they have 3 alternatives. Now, if a bill is passed in Rajya Sabha and Lok Sabha and is presented to the president, they can approve, reject and return. But when they clearly reject a bill, that comes under the absolute veto. So the types of veto are very important to study. And what are they? First, absolute veto. Second, qualified veto. Third, suspensive veto. And last, पॉकेट वीटो. अब हमें ये चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज क्वालिफाइड वीटो इज नॉट प्रेजेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट इज अवेलेबल विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट बट नॉट विद द इंडियन प्रेसिडेंट. अब इसमें क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया, एक बिल प्रेजेंट हुआ है प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज असेंट फ्रॉम राज्यसभा और लोकसभा. If the president returns the bill and the Lok Sabha and the Rajya Sabha again pass the same bill and present to the president with 2/3 of the majority, then the president will have to give his assent.
In that case, the president doesn't have the alternatives. They will have to give the assent to the bill. In absolute veto, if the president completely rejects a bill, that comes under the absolute veto. And what is suspensive veto? See, suspensive veto and qualified veto, as the name suggests, are different in terms of the majority that is required to overcome. रुक जाओ, पॉज करना एक सेकंड, मिटा ही दिया वो. I was saying the difference between the qualified veto and suspensive veto lies in the required majority to present it again to the President of India. In this case, suspensive veto, only the ordinary majority. What is ordinary majority? Members that are present and voting is ordinary majority. If the members that are present and voting again pass the bill and present it to the president, they will have to give the assent to the bill so that that bill can convert into an act. And what is pocket veto? Pocket veto जैसा नाम है, pocket veto, इसमें जो important चीज हमें याद रखनी है कि pocket veto as such हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. लेकिन पॉकेट वीटो क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि द ड्यूरेशन विच इज रिक्वायर्ड for an president to give his assent or to take any of the three actions on any bill is not defined. That is, a president can hold a bill without taking any action, for any longer period of time, for any duration of time, comes under the pocket veto. Like I will give you an example. जैसे कोई बिल आया लोकसभा या राज्यसभा से और प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट ने ना वो अप्रूव करा, ना रिजेक्ट करा, ना रिटर्न करा वो बिल, और वो इनडेफिनेटली टाइम के लिए प्रेसिडेंट ने अपने पास होल्ड कर लिया. इन दैट केस द प्रेसिडेंट डजंट हैव टू डू एनीथिंग एंड द पार्लियामेंट इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन टू गिव डायरेक्शंस टू द प्रेसिडेंट. ऐसे केस में उसे कहते हैं पॉकेट वीटो. अब ये कहा जाता है कि द पॉकेट्स ऑफ एन इंडियन प्रेसिडेंट इज डीपर देन द पॉकेट्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट. ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कोई बिल अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास आता है, दे हैव अ definite time under which they will have to take the action. But in the case of Indian president, there is no such time limit. Okay. So the next topic is ordinance making. Ordinance making power of a president. It is also a special power for the president. यहीं लिख लेते हैं. Ordinance are nothing but laws. कैसे laws? Temporary laws. ये important है. When a parliament is in recess, then only the president can pass an ordinance. और जो powers एक पार्लियामेंट के पास होती है, जिन टॉपिक्स पर पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, उन्हीं टॉपिक्स पर एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है when the parliament is in recess. See, to make a bill into an act, the assent of both the houses are required, Lok Sabha and Rajya Sabha. Even though if the one house is in session and the other is not, the president can pass an ordinance, because to convert a bill into an act, the assent of both the houses are required. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि इट इज अ टेम्पररी लॉ एंड इट कम्स अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज pardoning power of president. Pardoning power of president. Pardoning power of president गवर्नर के पास भी होती है, बट इट इज डिफरेंट देन द पार्डनिंग पावर ऑफ अ
प्रेसिडेंट। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पार्डनिंग पावर कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 72। ये याद रखना, आर्टिकल 72 गिव्स द पावर ऑफ पार्डनिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब पार्डनिंग पावर में क्या होता है, जैसे कोई कन्विक्ट है, वो उसके पास जो भी उसके ऊपर सेंटेंसेस हैं या अक्यूजेशंस हैं, अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन null and void all those sentences and convictions and free that person. That is pardoning power. अब pardoning power चार तरह की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट pardon, सेकंड commutation, थर्ड remission, एंड फोर्थ reprieve. अब गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत पार्डनिंग पावर मिलती है? आर्टिकल नंबर 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब पार्डनिंग में क्या होता है कि पार्डनिंग में अ पर्सन गेट्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम हिज एक्यूजेशंस एंड कन्विक्शन। इन कम्यूटेशन, what are the provisions under commutation? That suppose किसी को rigorous imprisonment मिला है for any number of period, so that imprisonment can be converted into a lighter form of punishment, that is ordinary imprisonment. अब ये होता है रेमिशन में। क्या होता है रेमिशन में? क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पनिशमेंट वोंट चेंज बट द ड्यूरेशन ऑफ द imprisonment or the punishment can be changed. For example, किसी को 3 साल की rigorous imprisonment मिली है, तो that can be shortened to 1 or 2 years of rigorous imprisonment. अब reprieve में क्या होता है? इसमें एक और पॉइंट आता है, respite. अब रेमिशन में क्या होता है? रेमिशन में, और पॉज करना है, अच्छा फिर से मैंने बोल दिया। अब हमारा आता है नेक्स्ट रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है? इट इज द स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द पनिशमेंट, स्पेशली डेथ पनिशमेंट्स। अगर किसी को, अगर प्रेसिडेंट से अगर पार्डन पावर के आर्टिकल 72 के अंडर अपील करनी है, तो इट कम्स अंडर द रिप्राइव, दैट इज द स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पनिशमेंट। देन कम्स द रिस्पाइट। अब रिस्पाइट के अंदर क्या होता है? किसी एक स्पेशल फैक्ट like the pregnancy of a woman or the disability of a person, they get a lesser duration of punishment in through respite. Like it comes under only the special suppose मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि if a woman gets pregnant, so she will get lesser number of punishment under the pardoning power, that is article 72 of the Constitution of India. Now, we have the next topic of constitutional position, the last topic of a president. कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में क्या है जो हमें जानना ज़रूरी है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि द प्रेसिडेंट इज ओनली द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। का मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल में कोई पावर नहीं है। जो भी प्रेसिडेंट, मोस्ट ऑफ द एक्शंस जो भी प्रेसिडेंट लेता है, वो लेता है अंडर द advice of council of ministers. That is article, which article? Article 74 of the Constitution of India. अब जैसे ही आर्टिकल 53 भी ये बात करता है कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
अब इसमें अब जैसे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, अब इसमें एक और बात जो हमारी इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है, विच इज कंपेरिजन विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड विच इज कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर ओनली two times, like the amount of terms that a person can serve as a president in America is 2 times, but in India there is no such limit on the number of times a person can be appointed as a president, so which is very important. Okay, so this was all about the president of India. अब इसमें जो हम एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, जो कि मोस्ट ऑफ द PYQs में भी आते हैं, they are related to the president of India. The first and the most basic question is, the president is part of which body? The options are A, Lok Sabha, B, Rajya Sabha, C, Parliament, or D, none of the above. As I told you, president is the part of the parliament. And what are the parts of parliament? Lok Sabha, Rajya Sabha, and the president of India. Okay, so then the next question would be, who administers the oath of president of India? Your options would be prime minister, governor, chief justice of India, or the फाइनेंस मिनिस्टर। ये तो मैंने आपको काफ़ी बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, द CJI, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड इन द absence of chief justice of India, who administers the oath? The answer is the senior most judge of the Supreme Court. So that is all about the president of India, which is required for the exam. There are many more things, but not from the perspective of exams. So that's all for today. I will see you in the next class. So thank you.